Part-2 of Chapter-6, Standard-7, Subject Science, Physical and Chemical Changes. As we have studied in the last part, physical and chemical change, what are the physical and chemical change? Physical change वो है कि जिसके size में, shape में वो change हो जाता है. और chemical जो है, a new product is formed and which is generally irreversible. So last part में हमने ये पढ़ा हुआ था. So today in this part we are going to start with the new activities. Activity 6.7. So dissolve about a teaspoon of copper sulfate in about half a cup of water in a glass. Copper sulfate solution है तो उसमें half glass की जो पानी होता है उसके अंदर mix करना है. क्या है कि copper sulfate solution जो है वो mix किया उसके अंदर. Add a few drops of dilute sulfuric acid. Copper sulfate blue color का होता है और dilute sulfuric acid जो है कौन सा होता है? H2SO white color का होता है जो colorless होता है. ये दोनों को हम mix करते हैं. Then you should get a blue colored solution. Save a small sample of the solution in a test tube or a small glass bottle. अब ये जो भी हम बीकर में ले रहे हैं, जो solution ले रहे हैं, उसको अलग से हम रख रहे हैं. As comparison, we have to compare the color of the solution. What the color of the solution is changing and what is the reaction is taking place. What other reactions takes place over the solution. So drop a nail or a used shaving blade into the remaining solution. Nail और जो blade है वो क्या चीज है? That is called as iron. ये copper sulfate जो है, ये copper हुआ, ये sulfate हुआ. हम क्या ले रहे हैं? Dilute hydrochloric acid. ये हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोजन और क्लोराइड. तो हमारे को क्या मिलेगा? ये कॉपर जो है ये अलग हो जाएगा. तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो हम हायर स्टडीज में पढ़ेंगे. तो ड्रॉप अ नेल और अ यूज्ड शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन. वेट फॉर हाफ एन आवर और सो. You will observe the color of the solution, compare it with the color of the sample solution, saved separately. You see any change in the color of the solution? Take out the nail of the blade. जो नेल है और ब्लेड है उसको निकालेंगे तो उसके ऊपर कॉपर जमा हो जाएगा और वो क्या है? नेल और ब्लेड वो आयन होता है. That is ferrous, Fe होता है. The changes that you have noticed are due to reaction between copper sulfate and iron. जो आयन और ये कॉपर सल्फेट ये दोनों रिएक्शन होता है और ये मीडियम होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. वो दोनों रिएक्शन के लिए there is need of a medium. The change of color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate. अब ये कॉपर जो अलग हो जाता है तो ये Fe जो है फेरस इस सल्फेट के साथ में मिक्स हो जाता है. तो जो नेल है, नेल जो लोखंड की जो ब्लेड होती है, जो नेल होती है, खिली होती है, उसके ऊपर हमारे को ब्राउनिश कलर का जमा हो जाता है और वो जो ब्राउनिश कलर जो रहता है इज कॉपर. ये फेरस के ऊपर जो होता है कॉपर जो है वो अलग हो जाता है. तो ब्राउनिश कलर का क्या हो जाता है? फेरस के ऊपर कॉपर जमा हो जाता है और फेरस सल्फेट हो तैयार हो जाता है एंड कॉपर इज लेफ्ट अलोन. Formation of iron sulfate, a new substance. The brown deposit on the iron nail is copper. Another new substance which can be written as reaction as copper sulfate solution plus iron hydrochloric acid जो है वो dilute with medium, so it is not included, and that gives you copper sulfate. Ferrous sulfate and copper is being displaced from the copper sulfate. There is another activity 6.8. Take about a teaspoon of vinegar in a test tube. Vinegar क्या होता है? Acetic acid होता है. Add a pinch of baking soda. वो क्या होता है? Baking soda is a base. So acid और base दोनों mix करते हैं. जैसे last chapter में पढ़ा हुआ था कि acid and base mix करते हैं तो क्या हो जाता है? Neutralize हो जाता है.
एंड न्यूट्रलाइजेशन के अंदर हमारे को सॉल्ट एंड वाटर हमारे को मिलता है. Add a pinch of baking soda to it. You would hear a hissing sound and see bubbles of gas coming out. ये दोनों मिक्स है तो साउंड निकलता है, बबल्स करके आवाज निकलती है. तो आवाज निकलती है उसके साथ में गैस रिलीज होता है. वो गैस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का गैस होता है. So pass this gas through freshly prepared lime water as shown in figure 6.5. So what happens to the lime water? अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लाइम वाटर के अंदर पास करेंगे तो लाइम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लाइम वाटर को टर्न्स मिल्की कर देता है. एकदम मिल्की सोल्यूशन वो लाइम वाटर हो जाता है. The change in the test tube is shown as follows. Vinegar is acetic acid plus baking soda, which is called as sodium hydrogen carbonate. Baking soda, sodium hydrogen carbonate. तो हमारे को क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस. तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे को एट प्रेजेंट हमारे को क्या फॉर्म रिएक्शन जो हमारे को चेक करना है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हिसिंग साउंड के साथ में रिलीज होता है वो हमारे को लाइम वाटर के अंदर वी हैव टू पास इट ऑन थ्रू द लाइम वाटर एंड दैट लाइम वाटर इट टर्न्स इनटू मिल्की. द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज. So carbon dioxide plus lime water. ये कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये लाइम वाटर हुआ जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है. Clear? What it gives? It gives calcium carbonate plus water. ये calcium carbonate और it gives water. And what is the solution? How it turns? It turns milky. तो when carbon dioxide pass through lime water, calcium carbonate जो होता है वो मिक्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. Is formed which makes lime water milky. The turning of lime water into milky is a standard test of carbon dioxide. ये कार्बन डाइऑक्साइड का हम जो टेस्ट करना है वो एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है कि lime water it turns into milky. You will use it in chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide. जो हम एयर बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड. वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड वी रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा हुआ था न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर भी देखे हुए कि प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन एंड इट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हाट दे डू दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक्स इन ऑक्सीजन. तो रात को उनको कहते हैं कि जो हमारे जो ओल्ड जो पेरेंट्स होते हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं क्या बोलते हैं कि रात को ट्री के नीचे हमारे को नहीं सोना है. Why? Because it releases carbon dioxide. So in the same way, we human beings also release carbon dioxide, which is a standard solution to use with what is the reaction of carbon dioxide and how we can understand the carbon dioxide. How the with lime water, if carbon dioxide is passed through, lime water turns milky. एक standard reaction होता है, एक standard ये इसका test होता है. So in activities 6.6 and 6.8 to 6.8, you saw that in each change one or more new substances are formed. Chemical reaction में chemical change में क्या होता है कि one or more, when the change is there, one or more substances newly formed. वो substance रह नहीं जाता, a new substance is formed. That is called as chemical change, which is irreversible. So in each change, one or more new substances were formed. In activity 6.6, जैसे magnesium strip हमने जलाया था, so what we get at the end product, we get the ash. Can we change it into the magnesium strip again? No, we cannot. So chemical changes is a new substance is formed, which is irreversible. A new substance, magnesium, was burned in air. In activity 6.7, the reaction of copper sulfate with iron produced iron sulfate and copper. Copper was deposited on the shaving blade of iron. जो लोखंड होता है, जो फेरस होता है, शेविंग ब्लेड होती है या नेल होता है, उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है और फेरस सल्फेट इट गिव्स एन solution of ferrous sulfate. So in activity 6.6, the ash was the new substance formed when magnesium was burned in air. मैग्नीशियम स्ट्रिप हमने बर्न किया, तो मैग्नीशियम स्ट्रिप बर्न करने के बाद हमारे को उसका जो प्रोडक्ट होता है, जो चेंज इन केमिकल चेंज होता है,
So what we are getting? We are getting fire, we are getting heat, जो gas release होता है, and the end product हमारे को क्या मिला? Ash मिला. So which is irreversible. वो change वापस reverse होके magnesium state नहीं होता. So in chemical change, one or more new substance is formed, which is irreversible. So both of these, activity 6.7 में हमने क्या देखा? The reaction of copper sulfate with iron produced iron sulfate and copper. Both of these are new substances. Copper was deposited on the shaving blade of iron in activity 6.8. Vinegar and baking soda together produced carbon dioxide, which turned lime water milky. Can you name the new substance formed in this reaction? Carbon dioxide standard test हमारा क्या है? कि when carbon dioxide is gas is passed through lime water turns milky. One change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. Chemical change, one or more new substances formed. And a chemical change is also called a chemical reaction. The change होता है is also called as chemical reaction. The chemical changes are very important in our lives. Chemical change हमारे life के अंदर बहुत important है. All new substances are formed as a result of chemical change. For example, digestion of food. Digestion of food जो हम खाना खा रहे हैं, what we eat, the raw vegetables which turn into a recipe of paneer curry or anything we are preparing, and then we eat, and that digestion of food जो change हो जाता है, digestion पूरा हमारे body के अंदर जो energy हमारे को मिलती है, that whole change, digestion of food is a chemical change. और ये वापस reverse हो सकता है? No, it is not reversible. It is irreversible. Ripening of fruits. Fruits को जब ripe करते हैं, उसको जब पका देते हैं, जब कच्चा आम ले जाते हैं, anything which is उसको ripe करते हैं, तो ripening of fruits is also a chemical change. Fermentation of grapes, etc. happen due to series of chemical change. A medicine is the end product of a chain of chemical reaction. जो दवा बनती है, chemical change के जो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, और उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो मेडिसिन तैयार हो जाती है. यूजफुल न्यू मेटल्स, न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट्स. प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट्स जो भी होता है वो सब केमिकल चेंज के वजह से होता है, एंड विच इज अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन. Indeed, every new material is discovered by studying chemical changes. We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. In addition to new products, the following may accompany a chemical change. एक new product form हुआ, लेकिन new product form होने के साथ साथ में कुछ and more things are added. Simple जैसे ये ferrous जो copper sulfate हमारे को ferrous और copper अलग हो गया, displacement reaction हुआ, तो ये new product तो ये हमारे को मिला, लेकिन उसके साथ में जो sides होता है, तो new things are also formed. मेन क्या होता है? हीट होती है, एनर्जी होती है, स्मेल होती है. जो फायर क्रैकर जो होता है हम जलाते हैं, तो जलाने के साथ में हमारे को क्या होता है? पहले फायर होता है, उसके साथ में हीट आती है, गैस आता है, उसकी स्मेल जो होती है एक खराब स्मेल आती है जो एनवायरमेंट को खराब करती है. सो दीज आर द थिंग्स विच accompany with a chain of chemical reaction. So heat, light and any other radiation, ultraviolet for example, may be given out or absorbed. Sound may be produced, आवाज भी, a change in smell may take place or a new smell may be given off. A color change may take place, color change भी हो जाता है. A gas may be formed. So let us look at some examples. You saw that burning of magnesium. Magnesium को burn करते हैं, कोई भी माचिस की तीली जलाते हैं, तो फिर burn a match stick. तो जो match stick होता है उसकी जो fire जो produce होता है, तो color change हो जाता है, gas निकलता है. So burning of magnesium removal is a chemical change. The burning of coal, wood or leaves is also a chemical change. In fact, burning of any substance is a chemical change. Any substance which burns is a chemical change. Burning is always accompanied by production of heat. Burn जो भी चीज होता है वो heat को produce भी करती है. So explosion of firework is a chemical change. You know that such an explosion produces heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. That is why you are advised not to play with fireworks.
पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो एक पोल्यूशन, और स्मेल जो आता है हमको ऐसा लगता है कुछ जला हुआ, तो दैट इज वाई वी आर एडवाइज नॉट टू यूज फायर क्रैकर्स. व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, अब जब खाना जो होता है वो खराब हो जाता है, बहुत देर बाहर रहता है, तो उसके साथ में जो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन रहता है, जो मॉइस्ट रहता है, उसके साथ में मिक्स होकर केमिकल रिएक्शन करता है, एंड द फूड की जो टेस्ट है एकदम स्टेल हो जाती है, खराब हो जाती है. सो दैट चेंज इन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन makes the food stale. So you must notice when food gets spoiled, it produces a foul smell. Shall we call this change a chemical change? Yes, you can say a chemical change. एप्पल लिया, एप्पल को हमने काटा, बनाना लिया, बनाना को हमने उसके ऊपर से कवर निकाल दिया, तो put it for some time. एप्पल को काट स्लाइस करने के बाद if we put it for some time, what happens? तो उसके ऊपर ब्राउनिश कलर जम जाता है, और ब्राउनिश कलर जमता है उसको बोलते हैं केमिकल चेंज बोलते हैं. You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. If we have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time. Repeat the same activity with a slice of potato or brinjal. Any fresh cut vegetables or fruits, उसके ऊपर चेंज जो कलर हो जाता है, that is a chemical change. खाते हुए कभी भी when we eat something, when we eat fruit or anything, if we see the freshly cut slice जो भी होता है उसके ऊपर कुछ देर के बाद brownish color जम जाता है. The change of color in these cases is due to the formation of new substance, and these changes are chemical changes. In chapter 5, we neutralized an acid with a base. Its neutralization is also a chemical change. Yes, it is also a chemical change. अब ये protective sheet दिया हुआ जो ओजोन लेयर होता है हमारा, उसके बारे में we must have heard of an ozone layer in our atmosphere. It protects us from the harmful ultraviolet radiation which come from the sun. जैसे हम स्टडी में न्यूज़पेपर में देखते हैं कि भाई ओजोन लेयर के अंदर हमारे को एक होल हो गया. Why? Because carbon dioxide releasing more amount of carbon dioxide. अब यही ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर को हमारे को प्रोटेक्ट करता है. कि जो अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से रिलीज होते हैं, वो ओजोन लेयर जो है उसको एब्सॉर्ब करके उसको कन्वर्ट करके जो ऑक्सीजन में भेजता है. सो इट इज ऑल्सो केमिकल चेंज. ओजोन एब्सॉर्ब्स रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन इनटू ऑक्सीजन. Oxygen is different from ozone. Can we call the breaking down of ozone a chemical change? Yes, we can say it is a chemical change. Now, next part, a chemical change हमने पढ़ा. अब rusting of iron. अब rusting of iron क्या होता है कि कोई भी हम लोग फेरस आयरन की कोई भी चीज लेते हैं, एक आयरन रॉड लिया या आयरन का पाइप लिया. अब वही आयरन का पाइप पूरी आफ्टर सन डेवलपमेंट, अब उसके ऊपर क्या एयर, ऑक्सीजन, मॉइस्चर जमा हो जाती है. वो आयरन के साथ में रिएक्ट करती है, वो ऑक्सीडाइज्ड होती है. जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो आयरन के साथ में ऑक्सीडाइज्ड होती है, और ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद अ न्यू प्रोडक्ट जो फॉर्म होती है वो रस्ट होती है. जो उसके ऊपर पोपड़ी जम जाती है ना, उसको बोलते हैं रस्ट. तो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म इज रस्ट. इट इज रस्टिंग ऑफ आयरन. सो इट इज अ केमिकल चेंज. सो लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग. दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स and slowly destroys them. Slowly iron जो पाइप होता है वो एकदम खत्म हो जाता है. Since iron is used in making bridges, ships, cars, truck bodies and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. अब ये iron को हम कार के अंदर यूज करते हैं, कार ट्रक्स के अंदर यूज करते हैं, ब्रिजेस में यूज करते हैं. अब वही रस्ट होके खत्म हो जाए तो हमारे को कितना लॉस होगा. अब ये लॉस को हमारे बचाने के लिए तो आयरन रस्ट हो जाता है, उसकी प्रोटेक्शन भी हमारे को करनी पड़ेगी. सो प्रोटेक्शन के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पेंट इट. आयरन के ऊपर रेगुलरली हम पेंट करना पड़ेगा. अब यही ब्रिजेस बने हैं, उसको रेगुलरली पेंट तो नहीं कर सकते. सो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजिंग दैट आयरन. द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. सो आयरन विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, एंड प्लस वाटर, it gives you rust. For rusting, the presence of both oxygen and water or water vapor is essential. In fact, if the content of moisture in air is high, moisture in the air content ज़्यादा होती है, तो faster it will rust. Iron जो
फास्टर प्रोसेस हो जाता है रस्टिंग के लिए, which means it is more humid, rusting becomes faster. So how do we prevent rusting? Prevent iron particles from coming in contact with oxygen or water or both. One simple way is to apply a coat of paint or grease. वो regularly हमारे को करना पड़ेगा, and we can't do that. In fact, these coats should be applied regularly to prevent rusting. Another way is to deposit a layer of a metal like chromium or zinc or both, जो हम galvanization करते हैं. This process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. Iron के ऊपर जो zinc कोट करेंगे, coating जो है zinc जो है, it prevents iron from rusting, and that process is called galvanization. हमारे जो नल के जो पाइप होते हैं, अभी तो प्लास्टिक के हैं, कोई चूना पाइप देखोगे वो galvanized पाइप होता है, उसके ऊपर zinc coated होता है, and that prevents from rusting. So this process is called as galvanization. The iron pipes we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting. You know that ships are made of iron, part of them remains underwater. Underwater पानी के अंदर ही रहता है, और जो sea water होता है that is salty, and that the process becomes more faster of rusting. On the part above water also, water drops keep cooling ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contains many salt. Salty water रहता है. The salt water makes the process of rust formation faster. Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. बार बार पेंट करते हैं, गैल्वेनाइज करते हैं, फिर भी वो रस्ट हो जाता है, वो खराब हो जाता है, और चेंज करना पड़ता है most of the parts due to regular change. So much so that a fraction of ship iron has to be replaced every year. Can you imagine the monetary loss to the world? ये monetary loss क्या होता है? कि money loss to the business, and which is prevented. So ये process of galvanization, what is the process? To prevent iron from rusting by coating of zinc or chromium. The rusting of iron we have to complete here. Now the last part of this chapter is crystallization. अब crystallization क्या होता है? वो इसका एक pure form होता है. कोई भी substance का pure form को crystal बोलते हैं. जैसे sugar हम लेते हैं. Sugar एक pure sugar होता है, उसके crystal होता है. Salt के भी crystal होते हैं, लेकिन वो pure form नहीं होते. जो हमारे को crystal ये है, crystal clear जो बोलते हैं, that means if we can see throughout the substance. So this crystallization is a pure form of a substance. In class 6, you have learned that salt can be obtained by the evaporation of seawater. The salt obtained in this manner is not pure, and the shape of this crystal cannot be seen clearly. However, large crystals of pure substance can be formed from the solution. This process is called as crystallization. It is a good example of physical change. ये physical change का example है. Now activity 6.9 is to be performed in the presence. Use only dilute sulfuric acid. You should be very careful while using any acid. कोई भी acid हम use करेंगे, we should always use dilute sulfuric acid. We shouldn't use concentrated. Take a cup full of water in a beaker and add few drops of dilute sulfuric acid. पानी लिया, उसके अंदर dilute sulfuric acid उसके अंदर डाला. Heat the water. When it start boiling, जब पानी boil होना start हो जाता है, तो what we are doing, we are adding copper sulfate solution in it, and we are drop by drop and slowly and steadily we are stirring also. And while stirring continuously, continue adding copper sulfate powder till no more powder can be dissolved. ये saturated हो गया. Copper sulfate powder पानी के अंदर डालते जाएंगे. डालने के बाद slowly and steadily stir करेंगे. अब stir करने के साथ में एक स्टेज ऐसा आएगा, वो स्टेज पे पाउडर जो है वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होगा. Filter till no more powder can be dissolved. Filter the solution and then allow it to cool down. Do not disturb the solution when it is cooling. So look at the solution after some time. उस solution के हम देखेंगे after some time. The crystals of copper sulfate जो है वो हमारे को दिखेंगे. If not, wait for some more time. ये crystals copper sulfate जो powder form में था वो crystal form में हो गया. And in
crystal form में, that is the pure copper sulfate. Clear? In this chapter we have completed this chemical, physical and chemical changes. ये यहाँ पर हमने chapter complete किया. अब new chapter के अंदर हम next chapter, chapter 7 we are going to start, and after completing this chapter I am going to send you PDF. उसके अंदर flow chart भी रहेगा और notes भी रहेंगे, exercise भी रहेंगे. Understand the flow chart very carefully. एक बार फ्लो चार्ट और नोट्स आप लोग स्टडी करोगे, you will understand the whole chapter in simple way. Okay, students?